पिला माने द मच अवेटेड अवेती ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 11 साइंस ऑलरेडी स्टार्ट हो सारानी सो देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू आउ पिला माने एई कोर्स रे आमे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रो बेसिक टॉपिक सब कवर करबा जहाँकि क्लास 11 साइंस रो पाठ बुझिबारे तुमको बहुत हेल्प करिवो तो आ वेट कौन कर वीडियो तल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अच्छी से क्लिक करके कोर्स पर रजिस्टर करो ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास स्क्रीन विजिबल अच्छी यस मैम हाँ मैम ओके तो लास्ट क्लास रे सर तुमको फंक्शंस विषय हिंट दे जंती फंक्शन कहा को कोवा में फंक्शन रे रेंज और डोमेन विषय भी बता ही छी तुमको यस मैम यस तो मैम तमे कांस्टेंट फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन क्वाड्रेटिक और लीनियर फंक्शन ए सब फंक्शन विषय पढ़ी सरछ सो आजिर क्लास रे हमें स्टार्ट करेगा आगुकू आफ्टर क्वाड्रेटिक यू विल गेट क्यूबिक फंक्शन हमें केमती एक्सप्रेस करू y is equal to fx ओके फॉर एग्जांपल यदि हमें fx is equal to 4x square plus 2x नहीं चिबा which type of function is this it is a quadratic function हमें कौन पे या को फंक्शन कहू छु कारण ए जो y रो वैल्यू y डिपेंड x होची को वेरिएबल तुमको कहै छी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल y कहां पर डिपेंडेंट होची x ऊपर है सो जहां ए पर्टिकुलर जिंस को मैं तो फिक्स करू छु ताहले हमें y रो वैल्यू पाई परछु ओके सो क्यूबिक फंक्शन ले कोन हबो इफ y is equal to x cube ततले x रा पावर मिनिमम 3 हेथिबो ताको हमें क्यूबिक फंक्शन कहि थाउ और यू कैन से fx is equal to x cube माने जो y टा ये गोटे x रा फंक्शन सेते f फंक्शन रा सिंबल आउ x होची तमरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रा सिंबल understood y is equal to x cube हला if we'll plot the graph जदि हमें प्लॉट कर दउ छु ताले what will be the nature of graph so this is x axis this is y axis okay so जते बड़े x रा वैल्यू 0 हबा xy धर्म टेबलेटेड कॉली जता x रा वैल्यू 0 हबा ताले y रा वैल्यू केते हबा 0 when x is equal to 1 1 x to 2 y will be 8 okay when 3 this will be 27 similarly हमें जदि नेगेटिव आड़े भी नबा when x is equal to -1 what will be the value of y -1 when -2 it will be -8 when -3 it will be -27 so हमें तो प्लॉट करिबा मेन पॉइंट कोडा मझी रे आसीबा 0 so this will be 1 point एठी मु 1 1 नै गली जदी गोटे पॉइंट हबो एठी 2 8 नै गली जदी एमती गोटे पॉइंट आसीबा एपटे -1 और 1 नेली जदी गोटे पॉइंट आसीबा आउ 2 8 जदी नै गली एमती गोटे पॉइंट आसीबा यस और नो यस मैम यस तो हमें जदी तको प्लॉट करिबा एबे ई पॉइंट सब जॉइन करिकी our graph will be like this so this is the nature of graph of any cubic function ये सिमिलर रहिबा ये जेमती एग्जैक्टली मिरर इमेज हो जे हमरा बस गोटे थर्ड क्वाड्रेंट रे रहिबा गोटे फर्स्ट क्वाड्रेंट रे रहिबा सो क्यूबिक फंक्शन को हमें डिफाइन केमती करि परिबा फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर आ माने कोन बुझिला तमे ये होची तमरा डोमेन ये होची रेंज ऑफ फंक्शन ये डोमेन ऑफ फंक्शन ओके सब रियल नंबर हमें एक्स रा वैल्यू नहीं परिबा यस और नो
any real number we can take and say y ର value कौन मिलिबा कोनोसी गोटे real number ही मिलिबा हमको. So in cubic function the domain will be all real numbers and range will be all real numbers. So the function will be defined from R to R, that means domain to range, such that fx is equal to x cube. जेतबे हमें function define करू हमें एमती तार domain range संगेरे function द nature कोन ये cubic function जानिलु आ तार domain कोन जानिलु तार range कोन जानिलु. Understood? Cubic function Yes, रे ma'am. no doubts. कोटा अच्छा डोमेन और रेंज कोन तमे जानि छ सब x र वैल्यू इज डोमेन और सब y र वैल्यू इज रेंज. ओके सो x कोन नहीं परिबा जतो बळे क्यूबिक फंक्शन अब हमें -1 -2 -3 एनी नेगेटिव नंबर नहीं परिबा 1 2 3 एनी पॉजिटिव नंबर नहीं परिबा हमें एनी नेगेटिव फ्रैक्शंस भी नहीं परिबा माने एनी नेगेटिव रैशनल नंबर भी नहीं परिबा इंटीजर्स भी नहीं परिबा सब नहीं परिबा पॉजिटिव रैशनल नंबर भी नहीं परिबा तो सबरो मिक्स अप हेले कोन आउची गोटे रियल नंबर आउची तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हे गला हमरा डोमेन. ओके सो रेंज कोन मे बी तमरा एटी 0 1 देखलो 2 एठी हमें पाइलु नु 2 रो क्यूब रूट किंतु 2 रो क्यूब रूट तो गोटे एग्जिस्ट करूची ना दैट इज ए रियल नंबर. सो रेंज भी रियल ही हबो. ओके से y टा को हमें कोन कहू हमें इमेज कहू आ x र वैल्यू को प्री इमेज कहि थाउ. अंडरस्टूड एबेटी फंक्शन डिफाइन हबो त हमें जानलु डोमेन भी सब रियल नंबर हे परिबो रेंज भी सब रियल नंबर हे परिबो. नाउ लेट्स मूव टू मॉड्यूलस फंक्शन. मॉड्यूलस फंक्शन तमे ऑलरेडी सर बतई सरचंती. Yes, ma'am. मॉड्यूलस फंक्शन द ग्राफ हां सर बतई सरचंती. सो व्हेन fx is equal to mod x ताको हमें कहू मॉड्यूलस फंक्शन. सो मॉड्यूलस फंक्शन जो अछि हमारा ताको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कुआई है. ओके अच्छा mod x माने कोन सब बेले गोटे ये पॉजिटिव नंबर हमको दबो. ये सर नो मॉड्यूलस माने हमें गोटे पॉजिटिव वैल्यू पाउछु. सो Yes, ma'am. okay so let us consider our x is less than 0 माने सब नेगेटिव नंबर अछि -2 -3 -4 एमती. सो f of -1 मु जदी नै गली that is mod of -1 equals to 1. अच्छा ये 1 वैल्यू का केमती पाइलो हमें ता माने this equals to minus of -1 हैला ताले +1 हैला. So when x less than 0 fx जो मॉड्यूलस फंक्शन हमारा will be -x. एटा बता हेतिबो तुमको. So fx equals to हम एमती एठी गोटे काली ब्रैकेट दे दो -x when x is less than 0 and it is +x when x is greater than 0. कारण यदि f of 1 नेलु that is directly 1. एथिरे कहार डाउट नहीं था. Ma'am, सेटा greater All than clear? equal to 0 हबा कथा. Yes, greater than equal to 0 ही परिबो. Less than 0 तमे this equals to f0 तमे केते बेले हबा ए जो जिंस 0 रे तमे 0 माइनस हो कि प्लस हो किछि फरक पड़नी ना तुमको. ओके सो ग्राफ प्लॉट करछो तमे म खाली जस्ट तुमको स्लाइड हिंट दे दोची. ग्राफ केमती थिला मॉड्यूलस फंक्शन रा यदि fx is equal to mod x ताले मॉड्यूलस फंक्शन रा ग्राफ एमती आस्तिला कि नहीं तुम ऑलरेडी करि सरचा. सबु नेगेटिव x पाई भी y हमारा पॉजिटिव हबा सबु पॉजिटिव x पाई भी पॉजिटिव हबा आइडेंटिकल हबा बोथ साइड से. ओके सो आर रेंज और डोमेन कोन हबा
को मते डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स सब नंबर हे परिबा ये सर नो का डाउट डोमेन सब रियल हे परिबा बोली Yes, ma'am. so domain will be R. What about range? Ma'am, natural numbers. Range माने कौन y. All natural numbers, yes, including 0. 0. Okay. So हमें देखो के हाँ केमती देखो 0 to infinity. Natural numbers बोली नहीं, all positive real numbers, natural numbers नुए. कारण minus 1/2 रा mod ना बता लिखे थे अब plus 1/2 है तो ये natural number नु है ना. So any negative real number ra modulus kanaba positive real number. So it will start from 0 to infinity and close bracket in 0 and open bracket. Yes, okay. So now let's move to trigonometric function. Trigonometric function আমি অলরেডি পড়ি সারিছু ডিসকাস কর সারিছু yes or no so যেতবেলে আমি গ্রাফ ড্র করथिलु suppose this is the graph of sin x मु sin x ର ଗ୍ରାଫ तुमको कहि सारची so it will be like this हाँ ना this is 0 pi by 2 pi and this is plus 1 and this is minus 1. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. Okay. So sin x ର graph ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ discuss कर ସାରିଛୁ. So को period रे sin x repeat होची कौन कहितली मु in which period sin x value of sin x is repeating graph देखी के मते को period रे repeat होची केही किछि बुझिछ कि बुझी ना मैम so पाई देखो पर ए पॉइंट रू रिपीट हो स्टार्ट कलु हमें पाई नहीं 2 पाई ए पॉइंट जाए देखो ए पॉइंट रू स्टार्ट हैला पाई जाए पॉजिटिव रहिला तापरे कोन हैला नेगेटिव हैला तो रिपीट केते जाए हैला एटा 2 पाई जाए सो मु तुमको कोन sin x रो sin फंक्शन रो पीरियड बतई थिल ना 2 पाई हां सो द पीरियड इज 2 पाई in case of sin function you can write down the period of sin x cos x sec x and cosec x equals to 2 pi but in case of tan x and cot x the period is pi तमाने ग्राफ हमारा पाई पर रिपीट करबा तुमको सब दिया है जी क्लास नोट्स रे तमे चेक करके कंपेयर कर परिबो पीरियड्स कोठी रिपीट हो जी कोठी नै सो प्रति 2 पाई रे sin x cos x एटसेट्रा हमारा रिपीट हो जी तो जेहेतु आरो गोटे पीरियड फिक्स अछि तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हमें गोटे टाइप रो पीरियोडिक फंक्शन बोली भी कहि थाउ ओके Any doubt till this point? Any doubt? No, ma'am. No? Okay. Now let us discuss. I jete graph सब discuss करिसरछु. So I am not discussing about the graphs. From the graphs, it will be easier to find out the range and domain of different trigonometric functions. Okay. So sin को आगे consider करो. Sin रा
डोमेन कौन होची और रेंज कौन हो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन और एठी तमरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन you can make a table here so it will be easier so जदि मो sin x नौची sin x माने हमारा फंक्शन ही जाउची sin x so y is sin x but x होची डोमेन कोन x रो वैल्यू हबो so all the real numbers हमें एंगल ले कोन पता x कोन गोटे एंगल हमें all real numbers नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव एंगल माने कोन डिफरेंट क्वाड्रेंट रहिले ताको हमें नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज यदि क्लॉकवाइज रहउची एंगल नेगेटिव नोचु सो डोमेन ऑफ sin x will be all real numbers set of real numbers okay so what about the range who can tell me who is the wiser one here ग्राफ देखो डायरेक्ट लिखाई छी किए मते रेंज sin x रो कॉल करो अच्छा जहां भी जो sin x रो वैल्यू कोठू स्टार्ट होची कोठू सरुची 0 रो स्टार्ट होची कि -1 रो स्टार्ट होची +1 whatever may be the angle maximum value is +1 and the minimum value is -1 सुबिलानी मैम आपन वॉइस कटिला अच्छा ओके आउ थरे मु कंटिन्यू करछि गोटे मिनिट तमे ठीक नेट रो प्रॉब्लम होछि बदा अच्छा जहां भी हो sin x रा वैल्यू आमे जत्ते भी एंगल नहीं जाऊ मैक्सिमम वैल्यू कोन देखि पड़छ तमे ई 1 रहउछि मैक्सिमम वैल्यू जहां भी एंगल हो whatever may be the angle and what is the minimum value -1 yes am I audible Yes, ma'am. okay so maximum value होची 1 और minimum value होची -1 और 1 और -1 both are included so the range of sin x will be -1 to 1 close bracket am I audible Yes, ma'am. okay so cos x रे भी हम जेतले ग्राफ ड्रा करथिलु कोन हेतिला माइनस एमटी हेतिला हम ग्राफ so here also our domain will be all real numbers and the range will be -1 to 1 कारण -1 रे स्टार्ट हेगी 1 रे सरुची तार वैल्यू इटा cos x y is equal to cos x or you can say fx is equal to cos x so it is +1 it is -1 तो तमे जहां नियो आ भितर ही तम वैल्यू रहउची ताठो बेसी वैल्यू हे परिबनी कि ताठो कम भी वैल्यू हे परिबो नाही तो -1 और 1 इंक्लूडेड अछि कारण से हमें दीटा केतोडा पॉइंट रे -1 और 1 भी वैल्यू पाउछु so that's why close bracket -1 to 1 now let us come to tan x okay tan x रे कोन हे परिबो tan x रो ग्राफ जदि तमे कंसीडर करबा आको ग्राफ संगे पके कि तमे कंसीडर करबा जदि किछि डाउट थिबा मते नेक्स्ट क्लास रे पचारिबा मते हमको सब ग्राफ दे सरछि सो tan x रे कोन होतला को पॉइंट रे हमारा फंक्शन डिफाइन करि पारनथलु जते π/2 3π/2 5π/2 7π/2 etc other points the graphs are so properly defined the points are properly defined so कोन हिजबा एठी हमारा डोमेन हिजबा r minus सब odd multiple of π/2 सब odd multiple को हमें बाहर कर दबा जितने रियल नंबर्स अछि तादु so this will be 2n plus 1 π/2 okay
So r minus jette 2n plus 1 pi by 2 achi. And what will be the range of tan x? केमती थिला tan x ର curve? Something like that. केमती थिला? It is not defined होतला pi by 2 case रे, minus pi by 2 case रे, 0 रे 0. Okay. So एठु तमे देखि पारछो सबो real number हे परिबो. Any real number. So the range of tan x will be any real number. Now what will happen? The range and domain of cot x, df, rf, cot x. अच्छा, cot x कौन होतला? Wherever sin x equals to 0, we cannot define cot x. Okay, so coco point रे sin x is equal to 0 होतला when x is equal to n pi. से point रे हमारा sin x कौन होतला? 0 होतला. So जतबेले हमें angle नबा, x माने कोन angle नबा, तो any real number minus n pi. Okay, सब real number रो हमें n pi को minus कर दबा. So domain will be highest. मैम मारो पूर्व पेज रे टिके देखो ना मैम. देखो कुआ कौन डाउट ना लिखिबो. मैम एडे r minus 2n plus 1 into pi by 2 से टिके आउथरे टिके जंदी. ओके सुनो, ए जो देखि पर जेटा tan x ର ग्राफ थिला तमरा, तमे ग्राफ संगे पक्की की कंपेयर करिबो. ग्राफ मु ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर सरची. ओके, सो ए जो pi by इटा कोन pi by 2, this is minus pi by 2 and this one is 0. So our tan x ର ग्राफ एमती जाय. pi by 2 रे not defined, तो एडी पैरेलल हे की पळेबो ये एमती ऊपर को आउ 0 रे 0 एटी 1 हे जिबा केते बेले केते बेले pi by 4 वे plus 1 minus 1 हबो. ओके, सो को जगह आमे को पॉइंट रे डिफाइन करि परिबेन, माने आमे थीटा रो कि x रो कोन वैल्यू नेले tan x डिफाइन हबनी, pi by 2 नेले हबनी, 3 pi by 2 नेले हबनी, 5 pi by 2 नेले एगुडा सब डिफाइन करि परिबेन. अंडरस्टूड? यस मैम. हां, तब आमे ताको कोन सब ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 नेले आमे डिफाइन करि परनु. तो आमे कोन करछु ऑड मल्टीपल को जत्ते रियल नंबर्स अछि तादरो माइनस कर दोछु. जत्ते ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 होची से +3 -3 -111 pi by 2 हेले भी कि -223 pi by 2 हेले भी सब जत्ते तमरा ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 अछि ताको हमें जत्ते रियल नंबर्स अछि रियल नंबर रु बाहर कर देले, दैट विल बी द डोमेन ऑफ आवर tan फंक्शन. रेंज कोन हबा एटु तमे देखि परछो ग्राफ रो एनी वैल्यू ऑफ माने सबो वैल्यू हे पारे कंसीडर तुम जत्ते बेले ऊपर को जाउची से बहुत एक्सटेंड होची ऊपर जाय. हां, बहुत एक्सटेंड होची. सो द रेंज विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, अंडरस्टूड? ये डाउट बचत थिला क्लियर? यस मैम. ओके, सिमिलरली जेमती cot x को उठी डिफाइन हे परिबनी जतबेले x इक्वल्स टू n pi हेतिबो. जस्ट अपोजिट तार. तो cot x र डोमेन कोन हे जिबो r minus n pi. ओके, and range कोन हबो set of all real numbers. Now this is clear. Now let's move to sec x. Sec x कोन हबो मते एबे sec x टे जे बुझी दिबो से कहि परिबो. sec x रा डोमेन भी इक्वल टू tan x हबो कारण sec x also 1 by cos x. तो जो जगह रे cos x रा वैल्यू 0 हबो sec x से डिफाइन हे परिबनी. sec x कर्व केमती थिला इटा +1 इटा -1 sec x कर्व
cos 0 equals to 0. So sec 0, so cos 0 equals to 1, sorry, cos 0 equals to 1. So sec 0 केते 1 हवा. तो ये भी तमर एमती इठी डिफाइन हवनी पाई बाय 2 रे, something like that. ऊपर पोर्शन भी एमती है कि जीवा. मैं मोटी भूल कर देली. Let us do it properly so that you will be clear. এটা যেতে পাই বাই 2 রে মু গোটে ডটেড লাইন ড্র করছি. So minimum value of जो तुम्हारे sec x रहिला, ओके, sec x कोन सब बेले 1 by cos x. cos x रा maximum value केते 1. cos x रा maximum value केते 1. बाकी सब 1 रु छोटो ही जीवा. तो sec x कोन मिनिमम वैल्यू 1 होगा, बाकी सब 1 रु बड़ा ही जीवा. आउ सेमती नेगेटिव रे भी अछि, सबटु कि हबा -1 तापर बाकी सब तळ को जाई जीवा. सो इट इज 0 पॉइंट जदी अछि, इट विल बी लाइक दिस. ओके, 0 रे cos 0 होची 1, तो sec 0 भी 1. अब पाई बाय 2 रे ये डिफाइन हबनी. So similarly cos pi केते, cos pi is also cos 180 degree रा वैल्यू केते -1. So sec 180 degree will be also -1. So एठी गोटे ऊपर रहइबा आ गोटे तळे रहउची. ओके, सो रेंज कोन हो, डोमेन कोन होची, सब पाई बाय 2 मल्टीपल को हमें माइनस करिबा, कारण पाई बाय 2 मल्टीपल जते ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वी कैन नॉट डिफाइन. yes or no, yes or no, am I audible? Yes, ma'am. So the Yes, domain ma'am. will be r minus 2n plus 1 pi by 2. अब रेंज केते हबार, रेंज केते हबा, देखा रेंज -1 रु छोटा नहले 1 रु बड़ होची. रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स, बट -1 रु 1 भीतर रियल नंबर हमें माइनस करूछु. ओके, तो तारा वैल्यू 1 -1 इंक्लूड करूची, बट ता मझे ए जो पोर्शन रही छी, ए पोर्शन रो वैल्यू एक्सक्लूड करूछु हमें एनी रियल नंबर्स रु. सो इट विल बी r -1 to 1. माने रियल नंबर रु हमें -1 रु 1 भीतर जते क्लोज ब्रैकेट नुहे, एटी ओपन ब्रैकेट, कारण 1 और -1 ता वैल्यू हेई परिबो. तो -1 रु टिके बड़ा, 1 रु टिके छोटो जाए हमें एक्सक्लूड कर दोछु रेंज को. अच्छा, एबे cosec कोन हबा, cosec x सिमिलर r minus n pi हे जिबा. जो जगह रे साइन डिफाइन हबनी से पॉइंट उडा हमें बाहर कर दबा cosec x लगे. डोमेन हे जिबा r minus n pi and sec x रे जेमती हैला, here also our range will be r minus -1 to 1. All clear? Yes, ma'am. Okay. So पीरियडिक फंक्शन कहंती ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को जानिला. sin cos sec cos x रा पीरियड होची 2 pi, tan और cot रा पीरियड होची pi, and different domain और range वो तुमको बतई देली पीरियड कोन हबा डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को. आ गोटे जिंस तुम्हारा फिजिक्स रे दरकार हबा, तमे बस नोट डाउन करके रखी था. एक्सपेंशन सीरीज आकु कहंती sin x equals to, sin x रे वैल्यू हमें केमती सीरीज रे बतई परिबा, x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial minus x to the power 7 by
7 factorial like this. And cos x will be 1 minus x square by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial minus x to the power 6 by 6 factorial like this. These are special series. Okay. Aku ame sin x ra series ko, aku cos x ra series ko. So do you know what is factorial? Factorial माने तमे जानी ना? So जदि कोनोसी जिंस n factorial अछि तामाने हमें 1 रु नै कि n जाय मल्टीप्लाई जदि करिवो ताको हमें n factorial कहताउ माने 1 into 2 into 3 up to n minus 2 into n minus 1 into n. That is known as n factorial. Suppose मैं तुमको 5 factorial कहली. 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. और तुम्हें oppositely भी लिखी पारा 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Now factorial कौन बुझिला? Understood? ये सब तमे मैथ्स रे प्रॉपर्ली पढ़िबो बहुत बेसी मैथ्स रे पढ़ा हबो ए सब बट फॉर फिजिक्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. Any doubt?